coffee from my Lord's cricket mug. हम्म, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे आप सब? बताइए मुझे, कौन कौन जुड़ा है, कौन कहाँ से जुड़ा है, कौन मैच देख रहा है? Is our regular viewer and subscriber Nomad Cricket, is he still at the Dharamsala cricket ground? Let's find out. तो दोस्तों, दूसरा दिन बस समाप्त होने वाला है, 2-3 गेंदें बाकी हैं। इंडिया 400 450 पार कर चुकी है, लीड 250 से ऊपर है। बहुत रन है, मैं मानता हूँ कल कल ये मैच खत्म हो जाना चाहिए। 250 ऑड ऑफ अ लीड इज वे टू मच फॉर दिस इंग्लैंड टीम। हो सके अगर वो थोड़ी फाइट दे दे तो लंच से पहले डे 4 पर, आई थिंक पहला सेशन मैक्सिमम तक ये मैच जाएगा, बट माय प्रेडिक्शन इज कि मैच तीसरे दिन पर खत्म होगा। अनदर वेरी वेरी इंगेजिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट, बट कहीं ना कहीं जितना भी मजा मुझे आया सुबह रोहित को 100 बनाते हुए देखकर, और फिर शुभमन गिल को 100 बनाते हुए देखकर, और फिर देवदत्त पाडिक्कल की डेब्यू इनिंग्स, और एक और फिर से तीसरा 50 सरफराज खान द्वारा। एंड आई एम श्योर आप लोग को भी बहुत बहुत मजा आया होगा, बहुत मनोरंजन मिला आपको भी। तो प्लीज कमेंट करिए कैसे लगा आपको आज का दिन। But it was, as the title of today's show says, it was a day of missed milestones, of missed opportunities, squandered starts. हालांकि इंडिया ये सीरीज जीत जाएगी, कल के दिन मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा to seal a 4-1 win over Bazball. अच्छा लगा मुझे जिस तरह से रोहित ने अपने आप को अप्लाई किया, शुभमन गिल ने अपने आप को अप्लाई किया, बट फिर रोहित शर्मा का आउट होना, मतलब 250 दिन के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद डाला एक टेस्ट मैच में, पहली बार उन्होंने सीरीज में डाला, और पहली बॉल उन्होंने रोहित को आउट किया। मतलब I'm taking nothing away from रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, but this was a day मेरे हिसाब से कि पूरा दिन बैटिंग करते, कल बैटिंग करते, बेरी बेसबॉल बेसबॉल तो खत्म होने वाला है। आज का दिन ऐसा मौका था इंडिया के पास कि इनको खत्म कर दो, बेसबॉल को मतलब जमीन में रगड़ दो। एंड आई थॉट रोहित शर्मा वुड गो ऑन टू गेट अ डैडी 100। आई थॉट मे बी शुभमन गिल जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे, आज लड़का 200 मारेगा। 200 और 100 में हाँ रन्स का फासला है, but this was a chance to really go for those daddy hundreds. England looked fatigued, they look like they've checked out, you know. Yes, they got some wickets, but I thought, you know, this was a day for Rohit to maybe get a big one, Shubman Gill to get a double century. कोई नहीं, बहुत बहुत खुश हूं मैं कि रोहित शर्मा ने इस सीरीज का अपना दूसरा शतक लगाया, और शुभमन गिल, a player who when this series started, like you all know, I said यदि लड़का पहले 2 मैच में रन नहीं बनाते हैं, he needs to get a break and go back to domestic. It's been so rewarding to watch a player who I've had the fortune of interviewing twice in the last 2 years, for him to, you know, turn around that inconsistent run of form. 200 मार चुके हैं, 2-3 50 मार चुके हैं, फिलहाल तो बंदे को नंबर 3 पे खेलना बनता है। पर अगेन, यू नो, मिस्ड माइलस्टोन्स। क्यों मैं माइलस्टोन शब्द का उपयोग कर रहा हूं? क्योंकि आई फेल्ट दिस वाज अ ग्रेट चांस फॉर रोहित टू गेट अ डैडी 100, शुभमन गिल टू गेट अ डबल 100। उसके बाद दोस्तों सरफराज खान और देवदत्त पाडिक्कल, मतलब क्या लगा देवदत्त पाडिक्कल, you know, whether or not he will bat at number 4, I mean, that's irrelevant right now. Maybe after Rohit Sharma's retirement from Test cricket, Devdutt Padikkal will come back and open the innings, or maybe he'll bat in the middle order. But that's immaterial. The point is कि Devdutt Padikkal, वही Devdutt Padikkal जिन्होंने सारे boxes टिक के यहाँ तक पहुंचने के लिए scored good runs for Karnataka this season, scored good runs for India A. He deserved to get a chance, and he just looked so at home at the crease, you know. Okay, batting beauty. England were slightly fatigued, but he looked like a proper test player. और जिस तरीके से देवदत्त पाडिक्कल ने 50 बनाए और सरफराज खान ने 50 बनाए, मुझे लगता है कि यार ये दोनों आज 100 मारेंगे। और ठीक जैसे रोहित शर्मा लंच की पहली गेंद के बाद आउट हुए, वैसे ही सरफराज 50 बनाकर टी के बाद पहली गेंद पे आउट हुए। बिल्कुल कैचिंग प्रैक्टिस दिया उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर रोहित शर्मा को। अगेन टेकिंग नथिंग अवे, सरफराज खान बहुत साल तक खेलेंगे देश के लिए, उनको ड्रॉप करना स्क्वाड से अभी नामुमकिन है। और देवदत्त पाडिक्कल भी जरूर खेलेंगे आगे जाके कई कई साल से, बिकॉज he's got a few more years on him than someone like a Sarfaraz, and he's looked much better than Rajat Patidar did. But you know, this was a chance, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब विराट कोहली और ऋषभ पंत और केएल राहुल, जब ये प्लेयर वापस आएंगे, तो ये जो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स हैं इनको साइड किया जाएगा। और क्योंकि बहुत बहुत कंपटीशन है, बहुत बहुत टफ है इंडिया के टेस्ट टीम में आना। और अब तो रोहित शर्मा ने कह दिया कि भाई सिर्फ
उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके अंदर वो भूख है, players who are hungry. So it's very, very important. कहने का मतलब ये है for the Dhruv Jurels, for the Patidars who unfortunately couldn't do it in 3 test matches, for Sarfaraz, for Devdutt Padikkal, for these players to grab their chances. And very, very good to see कि सरफराज खान ने 5 innings में 3 बार 50 किया, देवदत्त पाडिक्कल ने अपने पहली पारी में 50 किया. They've done enough to be recalled and to be remembered whenever the selectors meet in September, the next time a test squad is picked. But फिर भी missed milestone. There was a double hundred for the taking for our captain and for our number 3. There were definitely hundreds for Devdutt Padikkal and Sarfaraz Khan. तो जिस अंदाज से लोगों ने अपने विकेट दिया था, again India are on top. India have bossed this test match on day 1, day 2 मैच. हमारी टीम जीतेगी, बहुत आसानी से जीतेगी, बड़ी मार्जिन से जीतेगी. But a day of missed opportunities. कहने का मतलब ये कि आज बेसबॉल को कॉलर से पकड़ के मतलब जमीन में रगड़ने का मौका था. फिर भी लीड बहुत है, 250 पार हो चुका है. कुलदीप और जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन एप्लीकेशन किया. Unfortunately, Dhruv Jurel, same example. He looked so good, but he skipped down and he tried to hit a 6. He gave it away. Ashwin gave it away. Again, I'm not trying to demean what these players have done. आप गलत मत समझना मुझे. बहुत बहुत काबिल तारीफ दिन है ये जब आपने 475 तकरीबन रन बनाए हैं एक ऐसी पिच पर. आपने थकेले इंग्लैंड को खत्म कर दिया. But it could have been so much more. And I think in the 5th test match with the series wrapped up, it would have been good to boost averages, to boost confidence of players like Rohit who've had a hard time in this series, of Shubman Gill who's had a hard last 10-12 months in test cricket. Fantastic comeback from Shubman Gill, fantastic comeback from Rohit Sharma. But it could have, I just felt कि और एक जोरदार पारी ये दोनों खेलते, शायद 200 मारते. Just the way Jaiswal has grabbed his chances and got 200s. Definitely, I thought Sarfaraz and Jurel should have gone on to get hundreds. Nothing wrong with this track. एक दो गेंदे turn हुए, but this day should have ended 500 for 4, I think, instead of 473 for 8. But that's just nitpicking. Baseball has been crushed. Legacies and reputations will be snubbed after this series. सवाल उठने चाहिए baseball पर, reputation पर, legacy पर. But overall, another fantastic day of Indian cricket. Hats off Rohit Sharma, hats off Shubman Gill, hats off Devdutt Padikkal, and hats off Sarfaraz Khan for really, impressing with your batting on day 2 in Dharamsala. कॉफी पीते हैं और फिर सवाल जवाब के सिलसिले पर आते हैं. Utkarsh is asking thoughts about Gill from the start of the series where he's criticized. So now I think I just summed it up in my intro. I talked a lot about Shubman Gill. Fantastic. He came into this series woeful. 10-12 innings ho chuke the, 12-13 innings without him crossing 35. Started off very shakily, but got 100. Then got a duck, got a 90 odd before Kuldeep ran him out. Got another 100, got an unbeaten 50 odd to finish the Ranchi chase. And here, what a stroke-filled 100 today. I think today's 100 was probably the most settled he's looked in this series. So for now, he deserves to play, but he needs to be far more consistent. Ye inka sabse bada series hai. The most runs he's ever scored in a series. The first 5 test series he's managed to play through. Hats off to Shubman Gill for staying relevant when it looked like, 6 weeks ago that maybe he'd be struggling. Akshat, hello, sir. Love you. Shukriya, bhai. Love you too. What does Stokes' first ball in the series to Rohit signify about Stokes and Rohit individually as a player in the rest of their careers? Look, I've been very critical of Ben Stokes' captaincy. I've been more critical of Ben Stokes' batting. If he's bowling for the first time in 250 odd days and he strikes first ball, that just says what England have missed by not having him bowl. Galti unki nahi hai. Wo surgery ke baad aaye hai. He didn't feel the right to bowl. He didn't feel right to bowl. Taking nothing away from him, it just shows why he remains the most fascinating, the best seam bowling all-rounder of this generation. कि आप 250 दिन के बाद आप एक गेंद डालते हो और ऐसी बॉल की एक सेट सेंचुरियन को, रोहित शर्मा के लेवल के बैट्समैन को आपने बीट किया. Imagine if Ben Stokes had bowled more in the series. Maybe England would not have been down 3-1 in this series. What it says about Rohit Sharma, look, I mean, the ball stayed a bit low, the ball was good. You expect, I mean, Ben Stokes, as I said, the premier seam bowling all-rounder of his generation, like Ian Botham, you expect him to come back out of the blue and do something. But Rohit Sharma was set, यार 103 पे खेल रहे थे, 200 की राह पे जा रहे थे, ऐसे कैसे लूज हो गए? Shocking to me, but कोई बात नहीं. After all, it is Ben Stokes.
जय भाई, अगर आज और कल बैटिंग करते तो लीड 600 के आसपास होती। बिल्कुल, मैंने कहा था एक शो पे हार्दिक कि भाई करो, दबा दो। वो जो 952 रन 6 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका टीम ने हमारी टीम के साथ करी थी 1997 में, मैंने कहा भाई उसका बदला मत चुकाओ, लेकिन ये एक बेहतरीन दिन था। मैच तो मैच भी आप जीत जाओगे डे 4 पर। आई थॉट रोहित और गिल डबल मारेंगे, उसके बाद ये दोनों 100 मारेंगे मिडिल ऑर्डर में। मुझे लगा था आज 500 पे 4 और कल 600 650। नहीं हो पाया, पर फिर भी टीम की हालत बहुत बहुत अच्छी है और ये मैच हम लोग जीत जाएंगे आराम से। वैसे तो इंडिया बहुत आगे है से स्पोर्ट्स मैन, पर हमें इस तरह से विकेट नहीं फेंकनी चाहिए थी। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा था, बिल्कुल सही है। आई गॉट माई विश fulfilled, आशुतोष। इंडिया बैट द होल डे एंड टुक wheels of English bowlers would be super tired if we have fourth innings. बिल्कुल, in the words of VK, शाम तक खेलेंगे इनकी। Particle was good, absolutely. Your live streams are way better than substandard post-match show of Sports 18. Well, I appreciate your compliment. Thank you for your support. Why are there not much knowledge-oriented TV shows related to cricket like the one in Sky Sports? रजत, अगेन शुक्रिया, आपने इतने अच्छे शब्द दिए मेरे शो के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आई जस्ट ट्राई टू बी माई सेल्फ एंड आई ट्राई टू pass on my 19 years of experience as a cricket journalist and 28 years of being an Indian cricket fan. But खैर मेरी छोड़िए। Why are there not too many shows? मुश्किल है भाई, not everyone has the same passion. बहुत लोग इतने क्रिकेट, खास के आजकल के जमाने में डिजिटल के दौर पे बहुत लोग को मौका मिलता है टीवी के सामने, कैमरे के सामने, बड़े बड़े मंच पर, यूट्यूब चैनल्स पे, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे आकर ऐसी बातें करना, ऐसे व्यूज देने के, without even having having covered many matches. Again, that's fine, people have a job to do. बहुत बहुत लोगों को मौका मिला है। जब मैंने इस करियर में शुरू किया था 2005 में, ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। बट ठीक है, I've also benefited from platforms like YouTube in the last 4 years when I chose to leave mainstream media and try something different. But many people have pressures, there's agendas, there's someone in their ear saying ye karo, ye karo. It's very very easy to go and bring someone down. बहुत बहुत लोग हैं जिनके हजार शोज होते हैं हर हर साल के, जो दिन के 3-4 घंटे बैठते हैं, एंड दे हैव मैसिव व्यूअर्स. Maybe they're on to something that I'm not. Maybe they're appealing to the wider fan base. I don't know, but definitely मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं। मुझसे बहुत अच्छे, मुझसे बहुत डेडिकेटेड डिजिटल एनालिस्ट हैं और डिजिटल कमेंटेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। But unfortunately, the landscape in the era of social media has thoroughly been dumbed down. And hats off to those who can tap into it and really pick up the pulse of what many people want to hear. Kumar Kanish, regular viewer. The way Jadeja and Joel were batting there for a while, they went through a shell and built up pressure, which resulted in collapse. Kumar Kanish, बिल्कुल, ये हमने लगभग हर मैच में देखा है, दोनों तरफ से। दोनों तरफ के बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज हो या रुकी हो, जब भी लोग एक शेल में गए हैं तो सामने वाले बॉलर्स उन पे चढ़ चुके हैं। ये इंग्लैंड के साथ हुआ था जब हमारे बैट्समैन ने विशाखापट्टनम में और खासकर हैदराबाद में शेल पे गए थे जायसवाल को छोड़ के। यू नीड टू अप्लाई प्रेशर। इट्स बीन अ thoroughly engaging, entertaining series, the most fun I've had covering a series, watching a series at home since 2017. But बिल्कुल सही कह रहे हो, जब भी वो लोग शेल पे गए हैं तो सामने वाले bowlers इन पे चढ़ चुके हैं. That's why England spinners have taken more wickets than I thought was possible before the series began. हैदराबाद में जो हुआ बार बार नहीं होगा। बिल्कुल हैदराबाद में नहीं होगा, विराट कोहली नहीं थे, कुलदीप नहीं थे, बहुत सारे फैक्टर्स है। बट द पॉइंट इज कि बेसबॉल ने आके एक टेस्ट मैच में इंडिया को झटका दिया और फुल सलाम इंडियन टीम को, सारे प्लेयर्स को, कि वो झटके के बाद वो वापस आकर लगातार 4 टेस्ट मैच जीते हैं, मतलब चौथा जीतने वाले हैं। You think Sarfaraz or Pardik's innings was less milestone oriented than Rohit's or Gill's? Not at all. You had two batsmen who were on track for hundreds, their first hundreds. One of them was on debut. बहुत बहुत कम players अपने डेब्यू में ऐसे सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं जहां पे विकेट बहुत अच्छी हो बैटिंग के लिए, जहां पे स्कोर कार्ड प्रेशर नहीं हो. दिस वाज अ ग्रेट चांस फॉर पर्टिकल टू टिक ऑफ अ माइलस्टोन इन अ डेब्यू perhaps not many saw even coming. Sarfaraz needed to get 100. Gill and Rohit Sharma needed to get double hundreds. This was a day of milestones. मतलब milestones आपके सामने थे, आपके पास बहुत मौका था milestones का, नहीं हो पाया. Doesn't take away from what you've done, but yes, definitely India left 4 milestones out on the park. And in a match like this, with the series wrapped up with a 6-month gap before one test cricket resumes,
It was a great day. I'm not one for milestones all the time, but there are certain times, especially with players on debut, fringe players, replacement players. पार्टिकल सरफराज ये नहीं खेलेंगे जब विराट कोहली, केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर वापस आएंगे. So this was a great chance to put your hand up and say, hey, you know what? I got 100 in the last test match of the 2024 season. नहीं हो पाया, कोई बात नहीं. But yeah, definitely I feel all four of them left milestones out on the field. श्रेयांश कह रहे इंग्लैंड्स बॉडी लैंग्वेज वाज डाउन दैट इज विजिबल विद पुअर फील्डिंग एंड कैच ड्रॉप. बिल्कुल यार, ये टीम खत्म हो चुकी है. चलिए, इन्होंने आज थोड़ा फाइट दिखाया, इंडिया को थोड़ा टाइट सिचुएशन में डाला, बट ओवरऑल दिस टीम इज खत्म है. Jurel and Jaiswal gift their wicket. Yes, Jurel gifted it. Sarfaraz gifted it. पहली बॉल बशीर लंच टी के बाद खड़े होके स्लिप कैच. क्यों भाई, एक दो मैच खेल लेते. So yes, Jaiswal yesterday threw it away, but again, that's how he's played the whole series. जैसे कि मैंने कल के शो पे कहा था लाइव रिकैप पर कि कल जिस अंदाज में लड़का आउट हुआ, यानी कि जायसवाल आउट हुआ, उसी अंदाज से तो आगे बढ़ के तो शॉट मार के तो बंदे ने इस सीरीज में 700 रन बनाए. So I'm not going to be critical of him. He's had his time in the sun. He's got two 50s and two doubles. But Jurel was very disappointing. Rohit was disappointing. मतलब Ben Stokes 252 दिन के बाद वो गेंद डाल रहे हैं और आप उनकी पहली बॉल पे आउट हो गए. Jurel would be disappointed. Chalo, Padikkal can point to a good ball that beat the bat and turn. Sarfaraz, Jurel, no excuse here. श्रेयांश कह रहे इंग्लैंड will drop many players after this series. Most likely, but ये जो ढीठ है ना बैस बॉल को लेकर, हो सके ये सारे को खिला भी ले. स्पिनर जरूर ड्रॉप होंगे क्योंकि इंग्लैंड में इनको स्पिनर्स की जरूरत नहीं है. Ujjwal Maurya is back. Strange how luck plays a part in forging a player's career. Padikkal and Patidar both were nervous at the start. Padikkal could have been out 2 times, but it is what it is. बिल्कुल, luck has played a career in every single cricketer's career. और ये 150 साल से ऊपर ये बेहतरीन महान खेल चल रहा है. Yes, Patidar batted in somewhat tougher conditions than Padikkal. Padikkal had a platform. The lead was established. Batsmen had scored hundreds. This was a very good batting track. Patidar, perhaps didn't get that kind of a cushion. But the point is that he had 3 test matches and he failed to even get one innings of note. Whereas Padikkal, I think you can all agree, 6 pari Patidar ke, 1 pari Padikkal ka. Who looked more at ease? I think we all know. Sarfaraz would have gifted his wicket to Anderson instead of Bashir. He would have reached his 700 wicket. LOL. हाँ, मतलब at some point the way he was playing, you thought कि wicket आएगा, लेकिन टी ब्रेक के पहले बॉल पे यार 2-3 बॉल रुक जाता. Slip practice क्यों दिया? Anyways, he's got 350s in 3 test matches though. Ujjwal is saying, I just don't understand Jadeja's bat. He never looks settled. You can tell when he's going to score and when he's not. Yes, he's since that 100, he's gone into a shell. I would have thought he would have been a bit more adventurous, but can't be too harsh because we're talking about the finest batting all-rounder India have had in this decade. Shoaib Bashir, well-deserved 170. Also heard England had plans to make Pope as next captain, but do you think he's lost some way? Oh, absolutely. Pope might be one of the casualties after this series. They'll go towards Folks or Brook when Stokes goes away in 2 years. I don't know. Has Brook captained anything? I don't know. Brook ki captaincy leadership kya criteria hai? Folks has been very, very impressive. The way he's constantly been backing his bowlers, supporting them. Very, very sharp person behind the stumps. Maybe Folks is the option. Soothing meditation music. क्या नाम है? अपना असल नाम बताओ ना यार. English fans need a more aggressive team. I think the team is a bit too aggressive. That's why they've lost the series. Shubman Gill just lost his concentration. Again, second, third over after a lunch break. Break के बाद अक्सर लोग अपना focus खो बैठते हैं, but he looked very, very good for 200. Anderson played some mind game with Gill. Gill got beaten to the ball. He played the lofted figure earlier. Now he's playing close to the body. There were shades of how he got out to Anderson before also, but ठीक है, 100 तो मारा लड़के ने यार. Maybe I was being too harsh earlier on. Sumant, good evening. Could this series be turning point for Shubman Gill? Absolutely. We've discussed this with every innings that Shubman Gill has played. He came into this series in terrible form. I've said it. Had he not scored in the first 2 test matches, he should have been dropped. He probably would have been dropped had KL Rahul and Virat Kohli not been around. But to his credit, he tightened up his technique overall. He batted time. He used what we call crease occupation to his benefit, and he's got 452 runs and an average of 56, which in his
pretty lengthy career given his talent and his age, is the best returns for him. So, is he going to score runs in Australia? I don't know. Is he going to be successful in England? I don't know. Next year हम लोग 5 टेस्ट मैच खेलेंगे वहां पे अगले साल 5 टेस्ट की सीरीज है. I don't know. I think definitely tougher times ahead. But against this attack in these conditions, this is pretty much what we could have expected from Shubman Gill right now. He would have had a third 100 had Kuldeep not run him out. But a 90, 200s, 250s, very, very good for someone who was a mess before this series began. Ben Stokes, yes, Ben Stokes took a wicket today. मुझे लगा लास्ट सेशन में 150 स्कोर करेंगे. बिल्कुल मुझे भी लगा था भाई. डिड यू सी एट द टी ब्रेक जिस अंदाज से टी ब्रेक पर पडिक्कल और सरफराज अंदर गए थे. एक 50 पे खेल रहा है, दूसरा 50 के करीब है. I was like I said, I thought this day would end 500 for 4. Instead, 473 for 8. Missed opportunities by every single batsman जो आज आउट हुआ. अमदीप कह रहे हैं shots of Sarfaraz and Dhruv Jurel were needless. बिल्कुल, absolutely needless. कुलदीप बैटिंग has approved that he built a partnership with Jurel in last match. सही कहा आपने. आपको बता दूं, एक सेकंड, need some coffee here. कुलदीप यादव दोस्तों, कुलदीप यादव को दिसंबर 2022 में वो वापस आए टेस्ट टीम में. नवंबर में उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला बांग्लादेश में. आप सब जानते होंगे इंडिया वो मैच जीती. उन्होंने 8 विकेट लिए, 40 रन बनाए. और दूसरे मैच कहां था दूसरा मैच, पता नहीं, जहां भी था दूसरा मैच वहां पे उनको ड्रॉप किया. लेकिन यदि हम उस 2022 दिसंबर के मैच को जोड़ेंगे तो दैट्स व्हेन ही वाज रिकॉल्ड. ही प्लेड एट द स्टार्ट ऑफ 22 एंड देन ही वाज इंजर्ड एंड ही वाज ड्रॉप्ड. Since he's been recalled with the bat, Kuldeep Yadav in about 5 test matches is averaging 26. Lower order runs from Kuldeep Yadav are anything but detrimental to his career. In a highly competitive 11, खासकर overseas, जब जडेजा आपके नंबर 1 स्पिनर है, अश्विन आपके नंबर 2 स्पिनर है और अश्विन अक्सर नहीं खेलते हैं बाहर, कुलदीप का विकेट लेना. इस सीरीज में कुलदीप मुझे सबसे बेहतरीन स्पिनर लगे. लेकिन जिस सीरीज में बॉलिंग के अलावा बंदे ने जिगरा दिखाया बैटिंग करके, एंड एवरेजिंग 26 सिंस बीइंग रिकॉल्ड, it is going to be very, very tough for India to leave out Kuldeep Yadav now. Forget home. Home में तो he will play, लेकिन बाहर. तो ये जो आपने अभी जिक्र किया था कुलदीप की बैटिंग का, it is pitched himself as a great opportunity to play at least 2 out of 4 test matches, if not all 4 in Australia. क्या ये होगा? I think आप और मैं सब जानते हैं हकीकत क्या है. But this way that he's come back and put a price on his wicket batting, he faced 130 odd balls in the last test match. अभी भी ये खेल रहे हैं. तो कुलदीप यादव को पता है भाई, मैं विकेट तो बेहतरीन लूंगा, मैं बेहतरीन स्पिनर हूं, लेकिन इस टीम में अगर मुझे खेलना है, रहना है, तो मुझे रन बनाने पड़ेंगे. Hats off to him at the age of almost 30 for realizing that. Stokes with broken fingers, broken knees, bowling in test. Meanwhile, छोड़ो कुछ और बोला तो विवाद हो जाएगा. बिल्कुल समझ गया भाई, बोलना मत. उधर वो 7 टेस्ट मैच खेल रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया वाले, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस. 7 टेस्ट मैच लगातार. बीच में तीनों ने फालतू का T20 सीरीज खेला. तब नहीं आता भाई वर्कलोड मैनेजमेंट का नाम. समझ गया भाई, समझ गया. Akshat, Stokes' ball, someone initiated a collapse as a Sunday are batting ran up mentally. Onus on set batsman. Bilkul, like we discussed all through this live stream, Rohit had no business getting out to a bowler who was bowling for the first time in 250 days and getting out on 100 for that. Shocking dismissal. But that is the beauty and the charm of Ben Stokes. Vishal is saying great comeback from Rohit and Gill after performance. Yes, absolutely. जी भाई, एकदम अलग क्वेश्चन. आप शक्तिमान, अरे भाई कहाँ पूछते हो ये शक्तिमान वाला. नहीं सुनना मुझे शक्तिमान के बारे में है. शुक्रिया, मैं नहीं करूंगा. ये सवाल आ चुका है पहली बार और वो फिल्म ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी है और मैं उसका हिस्सा नहीं हूं भाई. सरफराज looked good on pull and cut. Yep, seems good on back foot. Yep, will be good down under. I like to believe. Yes, but यार he won't play in Australia. सर मैं तो रह भी नहीं पाता आपके क्रिकेट वीडियोस देखे बिना. शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया. जुड़े रहिए हर बार. नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना दोस्त. Padikkal was very defensive against spin. He was playing on back foot almost every ball. Good innings though. He has to improve his footwork. He does, but again, first test match, getting 60 odd. Hats off to him here.
राहुल पूछ रहे हैं, सर हाउ द पिच विल बिहेव इन इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स बैटिंग अकॉर्डिंग टू यू? पिच में यार ज्यादा कुछ नहीं है, हरकतें नहीं हो रही है ज्यादा, एक आध बॉल ठीक है, इसका खाना पिच वेयर इतना सा भी अगर मूवमेंट है और आप क्वालिटी स्पिनर हो, जैसे कि कुलदीप और अश्विन ने किया था डे वन पर, तो आप कुछ हासिल कर सकते हो। बट यार इनके स्पिनर्स यार बेचारे थक चुके हैं यार, 19 साल के स्पिनर हैं, 20 साल के स्पिनर हैं, 24 साल के स्पिनर हैं, इनके पास अनुभव नहीं है। they've done well to stay relevant, but look, there's not much purchase. It's not about the conditions. यदि ये अगले 3 दिन तक पाटा विकेट होता, इंग्लैंड के बैट्समैन इतने थक चुके हैं, पक चुके हैं कि आई थिंक कल का दिन हमारे बॉलर्स, खासकर स्पिनर्स, इनको खत्म कर देंगे। पिच में ज्यादा कल नहीं होगा, होगा तो डे 4 पे होगा, बट इट डजंट मैटर बिकॉज इन दिस मैच द पिच इज इररेलेवेंट। जे भाई, रोहित को जो बॉल मिला वो अच्छा था, ऐसा नहीं था कि रोहित ने पोर शॉट मारा और आउट हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आउट हुए, लेकिन बॉल अच्छी बॉल थी, लेकिन भाई आप एक्सपेक्ट करते हो, ये बेन स्टोक्स है ना, तो यू शुड बी, आई एम सेइंग योर सेट, इट्स द फर्स्ट बॉल आफ्टर अ ब्रेक। आप 100 150 बॉल खेल चुके हो, सामने वाला बंदा 252 दिन के बाद बॉल डाल रहा है, हैट्स ऑफ टू हिम। बट यार I was very, very surprised. In fact, I was sitting on another live stream with 3 people जब ये हुआ था, और तीनों ने कहा भाई एक सेट बैट्समैन आउट कैसे हो सकता है? ये कोई बॉल ऑफ द सेंचुरी नहीं था, हल्का सा लो रहा, इतना सा, बट फर्स्ट बॉल ऑफ अ सेशन टू अ बॉलर who's not bowled for 250 days. I found it very, very shocking. So, and the same thing happened to, I think the break, I think the break, the lunch break, both batsmen बड़े बड़े शॉट मार रहे थे, हो सके उनको लगा यार एक दो बॉल हम खेलें डिफेंसिव, it didn't work for them. But I was very surprised that a batsman who's been batting for 2 sessions got out to a bowler who'd not bowled a ball for 250 days. For me it was very, very shocking. Not since the series, sorry, now since the series is about to finish, what according to you has been the major highlight? There's a video coming out day after. I've given not one but 4 highlights. Stay tuned. 4 highlights and one major, major area of concern. 2 दिन रुको, video आपके सामने आ जाएगा. I love how Gill, Boss, Anderson, and Sarfaraz bossed Mark Wood, who got him out in the IPL. That was fun to watch. Mark Wood deserved pitai after withdrawing when he could have done before auction. मेरी टीम से गद्दारी, छोड़ो आईपीएल, 2 महीने चलेगा आईपीएल यार, फालतू टूर्नामेंट. Iyer got bounced out in Ranji Trophy semis as well. 2 bouncers. अरे भैया जो बंदा खत्म हो चुका है उसको हम क्यों लात मारे यार, जाने दो यार. Hi Jamie, Kuldeep will become match winner with overall. Yes, we did discuss this. Definitely he should play. What Manoj Tiwari said about Dhoni. Oh my God, कहाँ जा रहे हो यार? जिनका करियर खत्म हो चुका है उनके बारे में क्यों? Why are you dragging up muck यार? Don't kick a good man when he's down यार. कुलदीप 50 coming. मुश्किल है, but हाँ, let's see. अभी ज्यादा समय नहीं है इंडिया का टीम के पास. If Kuldeep and Bumrah would have batted all day and given up, England wouldn't have batted. England would have gone momentum. Maybe could have witnessed the Hyderabad situation again altogether. Possible, but ये मैच गया इंग्लैंड के हाथ से. Jaiswal becomes first player and 21st to score. Yes, we discussed this yesterday. कल इंडिया को फर्स्ट सेशन जल्दी रन बनाना चाहिए. बिल्कुल सही समीर. So do you think overall cricket of standard is declining? No. बहुत बार ये कह चुका हूँ. Test cricket is at a very, very, हाँ, overall teams थोड़े कमजोर हो चुके हैं. तीन तीन देश हैं जिनके पास पैसे हैं, वो सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन उन देशों के बीच जबरदस्त I'm talking about टेस्ट क्रिकेट. वनडे तो छोड़ो, वनडे तो खत्म हो चुका है. आई हैव नो टाइम फॉर वनडे क्रिकेट, खासकर बायलैटरल क्रिकेट, और T20 इज गोना बी ऑन फॉर years. बट आई थिंक टेस्ट क्रिकेट ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिक्लाइन नहीं हुआ. हाँ, अलग अलग टीम्स की बैटिंग थोड़ी कमजोर हो चुकी है, but the bowling has been, I think, the toughest in the last 10 years. Sarfaraz and Particle must be kicking themselves. Bilkul, like the topic of this show says, it was a day of missed milestones. Yes, Utkarsh, Sarfaraz, yes, discussed that. Would love to see Kuldeep bowl on fast Australian pitches, especially in Brisbane. Yep, the last time he played in Australia, he got 5 wickets in an innings. Thank God McCullum was not India coach. Otherwise, he would have declared at 400 and lost in the 4th innings. I still think McCullum should be hired by the BCCI for white ball cricket. He won't do baseball there. He doesn't even like the term baseball. McCullum, with his jigra and his cricketing mind, with India's white ball teams, ये बंदा इंडिया को एक आध ट्रॉफी जिता पाएगा, जो बेचारे राहुल द्रविड़ साहब की बस की बात नहीं है. On Gill, he's informed better in the past than Aussie. He has, but it was 4 years ago. Part of the Gaba heist. Brilliant. His defining knock.
kind of players who will do well. Yes, but he didn't do well in South Africa. I thought he'd do very well on those pitches, but again, he's bounced back really well. We should start talking about improvement in Bumrah, the batter. He's hung around enough times in Test cricket. Good evening, Prabhakar. Think India could win by an innings margin if England decides not to learn? Yes, I think it'll be over tomorrow by an innings. Sir, as team management will change, can we hope KL Rahul will not straight away walk into 11? No, I've said this before. जब तक राहुल द्रविड़ है केएल राहुल को एक लंबी रस्सी मिलेगी पर हाँ मैं चाहता हूं होगा नहीं मैं चाहता हूं कि केएल राहुल को भी अय्यर और ईशान की तरह मैसेज दिया जाए कि भाई थोड़ा डोमेस्टिक खेल के आओ बट होगा नहीं भाई it's hard for Ashwin to get a place in Sena to so Kuldeep की जगह कैसे बनेगी yep like I said he's a distant third but he's done absolutely nothing wrong to harm his chances Hardik Pandya सीखो Ben Stokes से कुछ Ben Stokes से सीखो जय भाई बिग फैन थैंक यू पैडी एम इंडिया अच्छे कंडीशन में है बट इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं हाँ बिल्कुल लाइक आई सेड इस शो का टॉपिक है अ डे ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज एनी वर्ड्स ऑन रोहित शर्मा निगेटिंग द शॉर्ट बॉल ट्रैप आए फैंटास्टिक क्या मारा मार्क को 9 ओवर 60 रन मजा आ गया मैं वही तो कह रहा हूँ रोहित शर्मा ने इतनी बेहतरीन पारी खेली शॉर्ट बॉल को मार मार के और फिर बेन स्टोक्स की पहली बॉल पे यार 252 दिन के बाद बेन स्टोक्स ने मैच में बॉल डाला और उस पे आउट हो गए यार वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग 200 थे भाई 175 थे आज रोहित के one thing that sports fan would like to point out that other players should learn how to score daddy hundreds from Jaiswal बात सही है बहुत बहुत ईगो बहुत बहुत भूख है उस लड़के में मनीष सोलंकी बैज लुक्ड बैम्बूजल बैज तो बेचारा इतनी बार उसने अपना आईपैड में देखा जब बेन स्टोक्स ने विकेट लिया है बेन स्टोक्स ने विकेट लिया 252 दिन के बाद वो भी रोहित का कमाल की क्लिप्स थे वो आज सरफराज ने अपना विकेट फेंक दिया फेंका लगभग सारे ने आज फेंका विकेट अपना सर आईपीएल जितना भी देख लो मजा टेस्ट क्रिकेट में है भाई आईपीएल ठीक है जॉब है शोज करेंगे लेकिन आईपीएल विल नेवर कंपेयर आईपीएल इज जस्ट अ डोमेस्टिक क्लब टूर्नामेंट यार On batsman getting out, mistake by batter, good ball, great fielding, catch, spare thought for Rohit. इसमें सब है इसमें अच्छी गेंदबाजी है जेम्स हैंडरसन द्वारा इसमें ठीक ठाक गेंदबाजी है बेन स्टोक्स द्वारा इसमें खराब शॉट्स हैं जयसवाल और जुरेल और सरफराज इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बट द पॉइंट इज आज 4 बंदे ने माइलस्टोन्स फील्ड पर छोड़ दिया आओ कभी जम्मू सर मिलेंगे चाय पर क्रिकेट डिस्कस करेंगे उम्मीद पे दुनिया कायम दोस्त एक दिन Good evening, Shubhankar. Is it possible tomorrow will be last day? Yep, I said this earlier. आप थोड़े late join किए हो. कल most likely खत्म. Maximum 1 hour into day 4. Sir, workload management के नाम पे celebrity tennis को maintain किया जा रहा है. अक्षत, क्या कह रहे हो? Naughty. बुमराह की भी 50 हो गए कल. He batted well today. भाई उस हो गया एक बार किया था उसने इंग्लैंड में शामी के साथ. मुश्किल है भाई कल. मुश्किल है. India should declare tomorrow to spice things up. नहीं यार खेलो बैटिंग करो सबको चांस दो प्रभाकर शर्मा रे भाई माय सन आयान इज सेइंग हाय टू यू हेलो आयान हाउ आर यू बेटा लव यू आयान हैव अ ग्रेट इवनिंग माय फ्रेंड बी नाइस टू पापा मामा sir how come a young McCullum was hired as a coach so early after time by a big team like England how his coaching skill was unearthed there's no reason why but as a captain in the latter half of his career he was outstanding. He changed New Zealand's test mentality. He took them to a lot of wins. He got double hundreds, triple hundreds. He got the team to the one-day World Cup final, and he's been with IPL and CPL franchises. तो बहुत बड़ा रिस्क था ये रॉब की और सेलेक्टर्स द्वारा एक ऐसे प्लेयर को बनाना एक तो जो ब्रिटिश नहीं है जो हाल ही में रिटायरमेंट के बाद फ्रेंचाइज क्रिकेट में आए थे बट मकलम अगर आप जानते हो मैंने मैचेस उनके कवर किए इनका इंटरव्यू ले चुका हूं 2015 वर्ल्ड कप मैंने कवर किया था बहुत मेरी बातें हुई ब्रेंडन मैकलम से यू कैन टेल कि उस स्वैगर उस टैटूज और शेड्स के पीछे उस मसल टोन बॉडी के पीछे भाई 1.5 दिमाग है बंदे के पास तो he impressed England with his approach he's just coaching the way he played cricket losing is not an option लेकिन हार गए कोई बात नहीं हम फुल जोश से खेलेंगे so I'm not surprised that they went to him from a traditional viewpoint someone who'd never coached at the first class level was a big risk लेकिन जब से रॉब की एक एवरेज प्लेयर थे टेस्ट लेवल पर उसी रॉब की को जब उन्होंने चीफ सिलेक्टर बनाया था इंग्लैंड क्रिकेट डायरेक्टर बनाया था वो भी एक रिस्क था
So, जब टॉप पे आप रिस्क ले रहे हो, फिर आप बेन स्टोक्स को कैप्टन बनाकर आप वहां रिस्क ले रहे हो, आप कुछ प्लेयर्स को रिटेन करके आप बहुत रिस्क ले रहे हो. The whole point of baseball is that baseball is, in 3 words, a high risk approach, and it starts from the ECB appointing Rob Key without any coaching, without any management. रॉब की ने अपना डोमेस्टिक करियर खत्म किया. वो स्काई टीवी, स्काई क्रिकेट के कमेंट्री बॉक्स में गए और सीधे वो इंग्लैंड हेड ऑफ क्रिकेट बने. उसी इंसान ने ब्रेंडन मकलम को बिना किसी फर्स्ट क्लास कोचिंग करियर के बावजूद उनको जॉब दिया. बेन स्टोक्स को जॉब पे दिया और देखो क्या क्या हासिल किया इन दोनों ने. Do you think Anderson will reach 700? If not here, then against the West Indies when they play in a few months' time. I would love Kuldeep and Bumrah to bat to lunch, then come back 2 hours and declare like lowest 21. It'll be fun. Nobody did well in SA apart from Kohli, so we shouldn't judge. Okay, fine. But Gill looked good for a couple of 30s and unlucky as well. Luck is also part of the game. It works both ways. One ball kept low from Rabada, other was down the leg side, golf clip. Again, but he was in a funk that time, so I thought he'd be much better, but ठीक है, both the matches hardly lasted 5 days completed. एक 3 दिन में खत्म हुआ, एक 2 दिन पर. Very very challenging pitches. क्या लगता है भाई, बुमराह और कुलदीप 100 रन लगाएंगे? चांस है, क्यों नहीं? Ravi went on air, Sydney on 5 for India, 1 series. Kuldeep, oh yes, you missed my rant yesterday on this same topic. I think despite Sarfaraz scoring 50, Jurel's up the picking order because he looked more secure and also bailed us out of tough situation in the last. And Sarfaraz yet to show that. हाँ, the point is कि जब ऋषभ पंत, केएल राहुल और विराट कोहली आएंगे तो तीनों में से नहीं खेलेंगे. They're all replacement players. They're all temporary players. I think of all the temporary players used in this series, 3 batsmen, 1 keeper, and 1 Akashdeep. Jurel is the one who should play even if Rishabh Pant comes back. I think he's shown enough. हालांकि आज उन्होंने बहुत घटिया शॉट खेला out होकर. It takes a little bit off what he achieved in Ranchi, but definitely when Rishabh Pant comes back and keeps wickets, पहले भी कह चुका हूं, मेरे हिसाब से जुरेल को एज अ बैट्समैन खिलाना चाहिए. सर, इंडियन टीम के बैट्समैन लकी है क्योंकि उन्हें जडेजा अश्विन की जोड़ी को फेस नहीं करना पड़ता और बुमराह को भी. हाँ, पर उस हिसाब से वो जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी जो लगातार 2 बार 16 मैच जीती, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर, एडम गिलक्रिस्ट, स्टीव वॉ, मार्को साइमंड्स, इन लोग को भी तो गिलेस्पी, ली, वॉर्न और मगरा को नहीं खेलना पड़ा ना, मगिल को तो, और वो नेट्स में तो खेलते हैं. तो समझ नहीं आया भाई पॉइंट. Hazelwood is a bowling machine. Not just him, all 4 of those guys, man. I would like England to score 400, 450 like. नहीं भैया, इनसे तो 230 भी नहीं बनेंगे यार. Hi, what should Pavan? I think you missed the whole live stream. 38 minutes we've been discussing the Indian team. थोड़े late हो आप. Which club do you support, Jamie? Liverpool. Football? नहीं भैया, I have no time for football. Cricket and only cricket. जुरेल और सरफराज को आगे भी मौका मिलना चाहिए. होगा, समय की बात है. देखो, 2-2.5 साल में अश्विन, जडेजा, रोहित और विराट कोहली रिटायरमेंट तो ले ही लेंगे. तब आएंगे पाडिक्कल, तब आएंगे सरफराज. तो समय की बात है. वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप, मुश्किल है भाई. जब तक ये बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं, आपको थोड़ा वेट और करना पड़ेगा. अच्छी बात है कि जुरेल, कुलदीप, सरफराज और पाडिक्कल ने इतना किया कि अब वो कभी स्क्वाड से ज्यादा दूर नहीं रहेंगे. Kuldeep's batting, yes, already discussed. He's averaging 26 since being recalled in December of 2022. 2007-2024, Kuldeep Yadav has come full circle at same place. Sad, man. 7 साल में केवल 12 test match for no fault of his own. Indian batsmen have to be ready for Australia bowlers. They do. As Australian batting does not look threatening. Australian batting has been picked apart by Pakistan, Shamar Joseph, and now New Zealand. But how do you counter these 4 bowlers? Yeah, the 4 horsemen of the apocalypse: Stark, Hazelwood, Cummins, Lyon. These 4 bowlers. आप सोच सकते हैं 18 में जब हमारी टीम वहां जाकर जीती, यही 4 bowlers थे. 20 में कोविड के टाइम पे जब हमारी टीम वहां जाकर जीते, यही 4 बॉलर्स थे. और 24 के अंत में जब ये लोग जाएंगे हमारी टीम वहां पे, वही 4 बॉलर होंगे. बताओ यार, क्या लॉन्ग, ये लोग खाते पीते क्या, इनका डाइट क्या है, इनका
सीन क्या है बॉस? ये 4 बॉलर 12 साल तक मतलब ये लगातार बॉलिंग कर रहे हैं। कमाल की बात है यार। PK is saying, I think England batsmen have no patience for staying at pitch because India provides. Oh yes, yes, ये तो पूरा 4 टेस्ट मैच हम ये डिस्कस कर रहे हैं भाई। Why did India again fail to score big runs? रोहित आप बहुत लेट आए हैं, 40 मिनट हो चुके हैं इस शो पर। पिछले 40 मिनट में इस सवाल को लेकर हमने कम से कम 10-12 जवाब दिए हैं भाई। जेमी, like your podcast, good work. When will you come to Nairobi? Thank you, Ashwin. पता नहीं यार कब आना पड़ेगा, बहुत दूर है यार नैरोबी नोएडा से। But thank you for your support. Jitesh and Jurel for T20 World Cup. No Rahul as keeper, please. Yes, discussed on many shows, but जब तक केएल राहुल के बारे में कोई ये नहीं कहे कि हम उन्हें सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक जगह खाली रखो भाई। केएल राहुल के लिए द्रविड़ के चहीते प्लेयर है वो। Even Stark and Lyon was in India 2003. Yes, they were. But I'm saying overseas. I'm talking about India's last 2 visits and the one we have in 8-9 months. It's the same bloody bowling attack, yeah. This is why Australian teams have won the T20 World Cup, the One Day World Cup, and the WTC in the last 3 years, yeah. Matlab, amazing Australian cricket, yeah. Amazing. सर बीसीसीआई पैसे से कितना कुछ कर सकते हैं, बट प्रोपेगेंडा और गवर्नमेंट के चाटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलिए आपकी राय है, मैं इस अभी शो के अंत पर उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। मैं जुरेल और जडेजा को रन बनाना था, हाँ बिल्कुल हमने 40 मिनट से किया था। कैन यू शिफ्ट योर रिव्यू स्ट्रीम्स लिटिल लेट, इट्स हार्ड टू फॉलो। प्रॉब्लम इज रोहित साहब, I don't like to work after 8 p.m. Every day from 6:45 to 8 p.m. I'm on a Cricket Next live stream. I need to spend some time with my family. I need to spend some time with my wife. I need to have family time. ऐसा नहीं है, जब मैचेस खत्म होते पूरे वर्ल्ड कप में मैं रात को 11:30-12 बजे लाइव जुड़ रहा था, कभी कभार स्टेडियम से, कभी यहाँ से। पर when a test match ends at 5 o'clock, there's no point me going live, 5-6 hours later. I understand आपकी समस्या क्या है। I do a morning stream every day to try and get interest and start the day. But as far as reviews go, I will do reviews when the IPL is on because the matches do go late. But भाई जब टेस्ट मैच 5 बजे खत्म होता है, मैं चाहता हूं कि मैं भी बिल्कुल स्टंप्स के बाद लाइव जाऊं। That's when we have the most passion. 4 घंटे बाद मैं थक जाऊंगा, मैं कुछ और काम में लग जाऊंगा, आप लोग भी होंगे। तो आई होप आप मेरा व्यू पॉइंट समझ पा रहे हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन। अगर जुरेल आईपीएल में बहुत अच्छा करता है 700 प्लस रन, यार भाई जुरेल नंबर 6-7 पे खेलता है, 700 रन उनसे नहीं बन पाएंगे। वो नंबर वो फिनिशर है, अगर वो 300 रन भी बना पाए फिनिश करके तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बार ये सवाल का जवाब दे चुका हूं। इंडिया का नंबर 1 कीपर T20 वर्ल्ड कप के लिए मेरे हिसाब से जितेश शर्मा है। और बहुत बार कह चुका हूं, यदि ईशान किशन इस आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए 450 रन बनाए पाएंगे तो वो जाएंगे एज द सेकंड कीपर। एंड that's my prediction. Anyways guys, got to go, 43 minutes, it's 5:30, got to wrap it up. Love you all, thank you for your lovely comments, all the lovely debate we had today. मैं आपसे कल मिलूंगा इसी टाइम पर, maybe recapping the win. I think कल खत्म हो जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें, enjoy your Friday, have a great weekend.